while Vigyan Bharati and Global Indian Scientists and Technocrats Forum initiated the Ahar Kranti program, several other agencies also have joined hands and have agreed to pool in their expertise and resources. One of them is CSIR, Pravasi Bharati Academic and Scientific Sampark, Prabhas. Now, I request Ambassador Gyaneshwar Muleji to present update on the progress of Prabhas. Ambassador Gyaneshwar Muleji is the chairman of Prabhas. He is also the member of National Human Rights Commission. He has served the Consul General of India in New York and High Commissioner of India in Maldives. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Gyaneshwar Muleji. मैं आपकी तालियां नहीं सुन सकता हूं, लेकिन समझ सकता हूं कि आपकी सद्भावनाएं मेरे पास मेरे साथ है। विज्ञान भारती के सभी महनीय व्यक्ति, हमारे CSIR के डीजी जिनके नेतृत्व में प्रभास का काम मैं संभाल रहा हूं, अन्य जिस्ट के ज्येष्ठ अधिकारी और बाकी पैनलिस्ट, भटकर जी भी है। मैं तो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इतनी बड़ी हस्तियां हैं, तो इनके सामने मैं क्या बोलूं। लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी मिली है प्रभास के जरिए, उसके बारे में ही मैं कुछ वस्तुनिष्ठ बातें करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रभास का जो मुख्य उद्देश्य है वो वही उद्देश्य है जो कि अभी LOG राव जी ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया। डायस्पोरा में जो हमारी वैज्ञानिक और तांत्रिकी वर्ग है, हमारे जो लोग हैं, वैज्ञानिक हो, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हो, विशेषज्ञ हो, उनको भारत के साथ सही तरीके से जोड़ने के लिए यहाँ एक संस्था की आवश्यकता थी। प्रभास का निर्माण जो है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के माननीय प्रधानमंत्री और वैभव की चेयरपर्सन इन दोनों के गाइडेंस में हुआ है। तो इस प्रभास से काफी अपेक्षाएं हैं और मैं चाहता हूं कि जिस्ट का आहार क्रांति का उपक्रम जो है वो हमारे इस प्रभास के उद्देश्य से बिल्कुल ही मेल जोल खाता है। तो इसलिए हम लोग इकट्ठा काम करने में जरूर दिलचस्पी रखेंगे। हाल ही में डीजी मांडे साहब के साथ जब मेरी बात हुई तो हमने इस पे ध्यान हमारा लगाने का तय किया कि हम थोड़ा सा तात्विक चर्चा में ना जाकर ग्राउंड लेवल पे किस तरह से काम बढ़ाएं, इसकी तरफ ध्यान दे दें। क्योंकि काफी सेमिनार्स, वेबिनार्स, डिस्कशंस चलते हैं, लेकिन एक एक मुद्दा लेकर हम कैसे ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हैं, इसके लिए हम जिस्ट के साथ और विज्ञान भारती के साथ जरूर काम करना चाहेंगे। अब प्रभास जो है उसके बारे में 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहता हूं और ये अंग्रेजी में बताऊंगा, ताकि अगर जिनको हिंदी के बारे में थोड़ा सा जिनका हाथ कच्चा है उनके लिए ठीक रहेगा। तो CSIR has developed a virtual platform. It's called Prabhas, meaning Pravasi Bharatiya Academic and Scientific Sampark. It's a portal to connect with the global Indian SNT diaspora for jointly addressing societal challenges, public problems. तो हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम्स हमारे देश में किस तरह से हमारे SNT डायस्पोरा का एक्सपर्टीज यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें काम करना है प्रभास के जरिए। Conceptualizing the portal as one-stop solution for the SNT diaspora and to unite similar efforts and experience of other major SNT departments and ministries, an interministerial working group was constituted for Prabhas initiative under the chairmanship of myself. I also am, as was mentioned, member of the National Human Rights Commission, where we also look at right to food, which is very much in line with Ahar Kranti, क्योंकि Ahar Kranti और right to food, they go together, and there is a huge need for coordination. There is a huge need for working out proper models so that supply demand
takes place properly and the end result is हमारी जो भूखमरी है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो प्रभास जो है लॉन्च किया था 31 अक्टूबर 2020 को। अभी तक हमने काफी अच्छे से पोर्टल डेवलप किया है। जो this portal provides information on S&T landscape in India, including various institutions for the ease of topical mapping, knowledge sharing, and building collaborations. Prabhas categorizes the R&D institutes of major central scientific ministries and departments in India in an organized S&T domain aligned to national missions and profiles. This will be very useful if you're not already registered. I think it would be a good idea to register in this particular portal. I'll tell you the address: www.prabhas.gov.in. It's a fairly holistic portal which facilitates almost every need that arises out of the objectives of Prabhas and perhaps similar objective of GIST and Vigyan Bharati, as I can see it. The Prabhas portal also provides an opportunity to post information on individual experts, scientific challenges to be addressed, and solutions to be posted to these challenges in this. I'll just give you some statistics. We are just 3-4 months old, but this is what we have done in these 3 to 4 months. We have a database of over 6,000 S&T diaspora members from 47 countries. We have around 300 registered diaspora and India-based S&T for collaborating and working towards this mission. We have presence of 50 societal challenges, meaning these are the problems of our society which have already been posed, and these challenges are to be addressed by our S&T community, diasporic community, along with their Indian counterparts. And there are 10 national programs, projects, inviting participation from registered experts. And finally, 266 Indian R&D institutions categorized in 20 specific areas, domains, aligned to national missions are also mentioned there. So without going further into other details that we have held about seminars, and webinars, etc., and meetings, I can say that from all top-notch technologies like green manufacturing to genome editing, AI applications in toy industries, a number of challenges are being currently worked upon by partners in India as well as the diaspora organizations, individuals. So with this, I take a pause. I request Ahar Kranti to see how best we can harmonize and work together in terms of achieving and attaining the objectives that have been slated as the vision of Ahar Kranti. I would like to thank all of you for giving me this wonderful opportunity and hope to interact with you more in the coming months and years. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया।